my name is Kevin. I'm from London, UK. I'm really happy to take my new voice. My problem started when I was 12 years old. This will definitely motivate people who are suffering from similar situations. I have high pitch voice problem. तो अभी तो सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वॉइस में काफ़ी फर्क आ रहा है. Okay. I actually had this surgery in the back and You said, I'll take it as a challenge and I'll give you your voice back without any invasive procedures. After surgery, I have vocal cord paralysis. And now I can speak normal. I feel good. Hi, I'm Cyrus. Hi, my name is Cyrus. Hi, I'm Sean. Now my voice has recovered and improved. इसलिए मुझे बहुत ही प्रॉब्लम, मैं पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ. My name is Rehabilitation from Bangalore. And I'm very happy that I'm speaking like a normal people with a bass voice like male. So I'm having this voice problem. I spoke with a few of my friends and they found reasonable changes in my voices. I've been facing difficulty in speech. You are able to speak words properly and sentences properly. Just you try to say something. treatment the same day. After 2 hours, I got my voice. Hello friends, welcome to our YouTube channel SLP Sanjay Kumar Voice Therapist, and today we are before treatment live with Vivek, and Vivek is having speech problem, and today we are before treatment live. Today date is 20th of January 2022, and in the future we are going to be post treatment live. So please subscribe our YouTube channel so that you can watch his post treatment live as well. And also you can press the bell icon so that you can get notification. So नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SLP संजय कुमार वॉइस थेरेपिस्ट पर। और आज हम लोग ट्रीटमेंट से पहले लाइव हो रहे हैं विवेक के साथ, और विवेक को स्पीच की समस्या है, फ्लुएंसी की समस्या है। आज हम ट्रीटमेंट से पहले लाइव हो रहे हैं, भविष्य में हम लोग ट्रीटमेंट के बाद भी लाइव होंगे। आज डेट है 20 जनवरी 2022 और भविष्य में हम लोग ट्रीटमेंट के बाद भी लाइव होंगे। तो इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में जब हम लोग ट्रीटमेंट के बाद लाइव होंगे तो आप लोग इनको देख पाएँ। और मैं हूं आपके साथ SLP संजय कुमार वॉइस थेरेपिस्ट। SLP मतलब होता है स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वॉइस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना। और मैंने अपनी पढ़ाई की है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से। मैंने ग्रेजुएशन किया है स्पीच एंड हियरिंग साइंस में। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मैंने स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से। और मेरा ये भी पैसन है वॉइस डिसऑर्डर स्पीच डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करना, और साथ साथ जो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, और जो फेक स्पीच थेरेपिस्ट हैं उनको एक्सपोज करना। तो विवेक जी, अपने बारे में और अपने प्रॉब्लम के बारे में बताइए, क्यों आपने हमें कांटेक्ट किया। माइक अनम्यूट कर लीजिए। Hi sir, I'm Vivek and I'm from Gujarat, and I'm suffering this a problem from childhood, and I've seen your videos on YouTube, so I thought I should contact you and I should share my problem to you and get the treatment from you. Since how long you are facing the problem, and what are the challenges you are facing because of the problem? From childhood, I'm facing the problem, and to talk to strangers, I'm not confident. If someone tell me to do that
think to go out and take something. So I was not so much confident to speak. Right. So I don't go out and I sit at home only. ओके, थैंक्स विवेक। और आप माइक को म्यूट कर लीजिए। So we'll be discussing in this live, in both in English, I'll be discussing why such kind of problem happens, what are the symptoms of the stammering, what we are going to do in the speech therapy, and in fact what we'll be doing in the online speech therapy, what are the other communication disorder for which our services are available, and how you can differentiate healthcare quacks and the real speech therapist. And at the end, I'll be giving some tips also for whom those who are not able to reach to a speech language pathologist or speech therapist, they can apply and it will support. I'm not telling it will be a substitute, but it will support. So please connect it with this live and let's move forward. To understand why this problem occurs, let's first understand the normal speech production mechanism. For normal speech production mechanism, first thing is the thoughts that comes in the brain. Then we take air, that air goes to the lungs. When we breathe out, we put air pressure below the vocal cord. Here we have larynx. Inside the larynx, we have two sting-like structures known as vocal cords. So once you put air pressure below the vocal cord start moving like a string of a violin and guitar and sounds will generate. Then we modify that sound into different sound with the help of our articulators like lips, tongue, jaw, teeth, palate. For example, if you want to say p, both the lips will be coming closer together and touching each other. When you want to say ta, tongue comes between the teeth. When you want to say ka, back of the tongue will elevate. So each and every sound has own place, own manner of articulation. So when you say a one sentence, so many things happen at a time. Thoughts come, we take breath, we put air pressure below the vocal cord moves, sound generate, we modify that sound into different sound. In one sentence, there are so many words, in each word there are so many sound, each sound has own place, own manner of articulation. So it's quite complex process. In this process, there are hundreds of our body muscles works in a very, very coordinated way. And if coordination among these muscles goes due to any reason, the fluency of speech will be affected. So in a simple way, I can say that stammering is a problem where there will be something lagging the coordination among the speech production muscles with the brain. So here we don't have any confusion, it's a universal. But when we talk about exact reason of the stammering, why stammering happen, so still the science has to give the proper answer. I have seen the patient who was absolutely normal and his friend was having a stammering and he was trying to tease him and he developed the stammering. What does it mean that? Stammering can be a learned behavior. I have seen the patient was absolutely normal and he has very emotional attachment with the grandmother and grandmother died and the child developed the stammering. So what could be the reason? Psychological or we can say emotional. I have seen the patient who was absolutely normal and he had a head injury. After head injury, he has developed the stammering. It can be neurogenic, it means. I have seen the patient, grandfather was having the stammering, son was having the stammering, grandson, twins they were, and both the twins were having the stammering. What does it mean? Stammering can be genetic in origin. So if we go on the reason, it's so much variation is there. And even I have seen that because from 2 to 5 years age, speech language development among children will be very fast and they will be having so many things to speak and they will be having limited vocabulary. So they want to say so many things and they have limited vocabulary. So they will stuck at certain point of time and this is a normal speech language developmental phase. But parents will think he's not speaking properly and they will start giving some negative comments. And because of the negative comment, the child will start developing the stammering. So sometimes this also it happens. So there are so much variation and how you'll be knowing that, especially in the children, like your child is having stammering. So if the child age is like 2 to 5 years or if he's having the stammering and that persists for more than 6 months, then you should consult a speech language pathologist. There can be normal non-fluency phase. So that will be not lasting more than 6 months. So it will just come and in just few months it will go away.
But if the problem persists for more than 6 months, then you should contact to a speech language pathologist. So this will help to the parents whose kids are having this stammering. And what we do in the speech therapy. So in speech therapy, as I told in the beginning, in the speech production mechanism, and there is a one universal truth, something lagging the coordination among the speech production muscles with the brain. So we try to coordinate all those muscles which are involved in the speech production mechanism. So we don't know which muscle is not coordinating or which muscles are not coordinating. So we'll take idea from the nature how the speech production mechanism has designed. So for speech production, what we need first? We first breathe in, and that air create pressure below the vocal cord, and then vocal cords move and sound generate. So first step is the breathing. So first thing, we'll be working to coordinate the breathing muscles. Technically we call diaphragm and intercostal muscles. Then next is what? The movement of the vocal cords. So the next exercise will be designed in such a way that the breathing muscles and laryngeal muscles both will include together. Then next is what? Movement of the lips and tongue, jaw, palate, everything. So the next exercise will be designed in such a way it will help to coordinate the breathing muscles, laryngeal muscles, articulatory muscles. Then we'll come to the words, and slowly we'll increase the number of words, and then we'll come to the conversation with the therapist, then with the family members, with the friends, using the technique what we teach, and then in a group, and then strangers and the group. So this is how the speech therapy has planned. It's just like a learning driving, cycling, and swimming. So if I'm sitting here and somebody want to learn how to do the cycling, so I can say simply hold the handle, put your leg on the paddle, press the paddle. So this will not be teaching of cycling. So give instruction, at the same time there should be some practical. So that practical here we call the speech therapy. And because all the instruction we are going to give by online method, so you can say it's an online speech therapy, but the instruction will be the same when the patient come to for the offline therapy or online therapy. Instructions are the same, only the mode of instruction are different. When patient come to the clinic in the offline method, physically they will be seeing me and I'll be giving the instruction. Here I am seeing like by the video chatting or by tele-rehabilitation, and I'm giving the instruction and patient is following. So this is the basic difference. And I was telling, even I'll be discussing what are the other communication disorder for which we provide the speech therapy at our center or voice therapy at our center. To understand that, please explore our YouTube channel's playlist. Once you explore that, you will find different playlists for different communication disorder, and that playlist will be having pre and post treatment videos as well. So you'll find playlists for Puberphonia, high pitch voice. You will find playlists for vocal cord paralysis, stammering, functional aphonia, functional dysphonia, misarticulation, aphasia, spasmodic dysphonia, phonatory gap, sulcus vocalis. So that will give you an idea how a certified speech language pathologist changes the life of people having communication disorder. And even you will be able to find the playlists for the patient, those who are having the hearing impairment. We did the hearing testing, and once we fitted the hearing aid instrument, how the communication improved. So because I'm by profession, I'm a speech language pathologist and audiologist. In India, there is no separate course, at least at the bachelor level, only speech therapy or only the audiology. Those who are having in this field, they will be having a graduation in speech and hearing science or speech language pathology and audiology. So they will be having knowledge of both speech therapy as well as audiology. So that's why by profession, I'm a speech language pathologist as well as audiologist. But I have done my post-graduation in the field of speech language pathology. So, and my area of interest is voice disorder. So that's why you can say that I have master degree in speech language pathology and the bachelor degree in speech and hearing science. So I am more specialized in the speech language, speech therapy field, but I have बैचलर डिग्री इन बोथ ऑडियोलॉजी एज वेल एज स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी. तो कई बार क्या होता है कि झोला छाप किस्म के लोग, हेल्थ केयर क्वैक्स, दे विल जस्ट मेंशन द स्पीच थेरेपी. सो center, they will not mention the where they have studied, what degree they have. So just try to find out what degree you have, from which university, which college they have studied,
and registration number like RCI number. So just try to find out. So you'll be understand that who is the healthcare quacks or who is the real speech therapist, because those will be fake speech therapists. First thing you should inquire is where they have studied, because the degree they can put some fake also, ABCD XYZ. So you should not bother about those XYZ ABCD. First criteria is from where he has studied. Just concentrate on that point. The next you can come, he has bachelor degree or master degree in this field. In USA, like countries, they should have at least master degree to work as a speech language pathologist. But in India, बैचलर डिग्री ऑल्सो फाइन. इंडिया में जो है बैचलर डिग्री भी है तो काम चल जाएगा, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए आपको एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट काम करने के लिए. तो कॉलेज के बारे में पता करना है कि आपका स्पीच थेरेपिस्ट कहाँ से पढ़ाई किया है, पहला क्राइटेरिया होगा. फिर डिग्री क्या है, ग्रेजुएशन की डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का नंबर क्या है, RCI नंबर क्या है. और ऐसे कोई भी ठग झोला छाप किस्म के स्पीच थेरेपिस्ट अगर किसी भी माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं या आपके कम्युनिकेशन को ख़राब करते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं, तो आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट कर सकते हैं. RCI जो है स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन लेती है ऐसे जो है झोला छाप स्पीच थेरेपिस्ट के खिलाफ. तो मैं अवेयरनेस क्रिएट करते रहता हूँ, लेकिन साथ में पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है तो वो भी रिपोर्ट करें. और मैंने वो कुछ बोला था टिप्स के बारे में भी, टिप्स मैं दूंगा वो लास्ट में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेता हूँ, कुछ अगर होंगे तो उस पर भी चर्चा करूँगा. तो कई सारे लोग जुड़े हैं, मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा. टॉनी स्टार्क, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. एंड अपना, thanks for joining and watching. And thank you all for joining and watching. And I'll be at the end of this live. Please be connected. I'll give some tips. If you have a stammering and if you're not able to find a speech therapist, what you can do at your home. That will not be a substitute, but it will be a kind of support. So please be connected with us. और मैं अब थोड़ा सा हिंदी में भी बात करूँगा. उससे पहले मैं चाहूँगा कि हिंदी में एक बार विवेक जी बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको और आप कहाँ से हैं और कब से फेस कर रहे हैं, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं. फिर हम हिंदी में भी थोड़ी बात करेंगे जो भी कुछ मैंने इंग्लिश में बोला. हेलो, मेरा नाम विवेक है और मेरे को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है पहले से ही, जैसे चाइल्डहुड से मेरे को प्रॉब्लम है ये. और मैंने एक क्लास किया था, योगा क्लास, और उसमें मेरे को ना ब्रीथिंग पैटर्न को भी सिखाया गया था, लेकिन वो मेरे को थोड़ा फायदे में रहा था, थोड़ा मेरे को ठीक हुआ था उससे. पहले तो मैं बहुत था, मतलब हर एक वर्ड में मेरे को था. और मैं अब गुजरात से हूँ. थोड़ा गुजराती में बताइए क्या है, सॉरी, थोड़ा गुजराती में बताइए क्या प्रॉब्लम फेस कर, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताइए, क्यों आपने हमसे कांटेक्ट किया. मैंने आपके बहुत सारे प्री एंड पोस्ट वीडियो देखे कि कैसे, मतलब कैसे लोग आपके पास आए और बाद में कैसे ठीक हो गए. तो मैंने भी सोचा कि मेरे को भी ठीक है ना, अब करवाना है, और इसलिए मैंने आपको ना अब कांटेक्ट किया. मैंने बोला गुजराती में बोलने के लिए, आप हिंदी में ही बोल दिए, थोड़ा लोकल लोगों को भी समझ में आए. हाँ, बोलिए गुजराती में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. મને સ્ટેમરિંગ નો પ્રોબ્લેમ છે અને હું ચાઇલ્ડહુડ થી મને પ્રોબ્લેમ છે. અને પહેલા હું બહુ એને થતો હકલાતો હતો, અને પછી મેં અહીંયા એક ક્લાસ કર્યા હતા, યોગા ક્લાસ. તો
એનથી મને થોડુંક થયું અરે 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 રાહત મળી હતી થોડીક તો પણ ठीक है तो अब ठीक है तो अब ना हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि थोड़ा टाइम कम है 5 बजे लाइव स्टॉप करूंगा तो उसके पहले कुछ चीज़ें बतानी है थोड़ा हिंदी में भी बताना है और मैं कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ हिंदी में ये बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है तो इसके लिए है कि जो हमारे स्पीच प्रोडक्शन के मसल्स हैं उनका ब्रेन के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है इसलिए प्रॉब्लम होती है और स्टैमरिंग के लक्षण क्या हो सकते हैं कि लोग जो हैं रिपीट भी कर सकते हैं जैसे अगर किसी को किरण बोलना है तो किक 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 किरण भी बोल सकते हैं प्रोलॉन्गेशन भी हो सकता है रिएक्शन बोलता है री हो सकता है फिर कभी एक लंबा पॉज हो सकता है जैसे मेरा नाम संजय बोला तो मेरा नाम फिर उसके बाद एकदम बड़ा सा ब्लॉक फिर संजय है फिर कभी क्या होता है कि लोग फिलर के रूप में कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं जैसे कि मतलब कि उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी ऐड किए जाते हैं तो ये सारे स्टैमरिंग के सिम्टम हो सकते हैं स्टैमरिंग का मतलब होता है नॉन फ्लुएंट स्पीच एब्सेंस ऑफ स्पीच नहीं होता है तो मतलब फ्लुएंसी नहीं है स्पीच में लेकिन स्पीच है और हम लोग स्पीच थेरेपी में क्या करते हैं कि जो स्पीच प्रोडक्शन के मसल्स हैं उनका जो है कोऑर्डिनेशन कराने की कोशिश करते हैं आपस में क्योंकि जो इस प्रॉब्लम का मेन कारण होता है वो यूनिवर्सल रीज़न यही कर सकते हैं कि जो स्पीच प्रोडक्शन के मसल्स हैं उनका ब्रेन के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है तो हम लोग स्पीच थेरेपी में वही कोऑर्डिनेशन कराने की कोशिश करते हैं बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप ड्राइविंग सीखते हैं साइकिलिंग सीखते हैं स्विमिंग सीखते हैं तो एक प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट से अगर आप हेल्प लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं और झोला छाप किस्म के लोग भी इस फील्ड में काम करते हैं लेकिन उनसे आपको बचना चाहिए और थोड़ा सा मैं बोला था कि मैं टिप्स वगैरह भी दूंगा तो उस टिप्स में क्या है कि अगर आपको या आपके किसी चाहने वालों को स्टैमरिंग है आपके आसपास में किसी को और स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ ये स्पीच थेरेपी का सब्स्टिट्यूट नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा एक सपोर्ट करेगा आपको स्लो होकर के बोलना है जैसे कि अगर मैं ही खूब फास्ट बोलूँ मेरा नाम संजय कुमार है मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ तो इतना अगर फास्ट बोलूँगा तो हमारे स्पीच प्रोडक्शन के जो मसल्स हैं ब्रेन का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर वे में होने में मुश्किल होगा और अटकने की संभावना बढ़ेगी तो अगर हम स्लो करके बोलते हैं तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है कहना बहुत आसान है स्लो के बोलिए इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल है तो वो स्पीच थेरेपी में उससे सपोर्ट मिलता है लेकिन एज ए टिप्स के रूप में मैं ये कहूँगा कि आप स्लो होकर के बोलिए उससे सपोर्ट मिलेगा और क्या है कि अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं क्योंकि हमारे जो कई सारे स्टैमरिंग के पेशेंट में देखा गया है कि उनकी जो ब्रीदिंग की जो टेक्निक होती है वो प्रॉपर वे में नहीं होती है तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो है वो मोस्ट इफिशिएंट वे है ब्रीदिंग का जो टेक्निक है इसमें क्या करना है जब आप नाक से सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा जब सांस छोड़ेंगे तो पेट पिचकेगा मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आप लोग ध्यान से देखिए जब आप जैसे सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर आएगा जब सांस छोड़ेंगे मुंह से छोड़ना है तो पेट पीछे जाएगा ऐसे करके तो इससे क्या होगा कि डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स में बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा तो आप इस एक्सरसाइज को भी 5 to 10 मिनट ट्राई कर सकते हैं अगर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो लेकिन ये अपने आप में सिर्फ ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज सफिशिएंट नहीं है लेकिन एक सपोर्ट के रूप में तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको स्लो होकर के बोलना है और मैंने एक टिप्स मैंने दिया ब्रीदिंग मसल्स को कैसे कोऑर्डिनेट करना है ये करना है और अगर आप बोलते बोलते अटक जाते हैं कहीं पे तो उस समय ये एकदम से रिपीट नहीं करना है सेम चीज़ को बार बार जैसे कि अगर आप कहीं पे अटक गए कि मेरा घर गुजरात है अगर आप बोल रहे हैं और ग पे अटक गया तो गुजरात गुजरात बार बार रिपीट नहीं करना है गुजरात गुजरात अगर गुजरात पे अटक गए तो वहाँ क्या करना है रुक जाना है कंप्लीटली रुक जाइए दोबारा से सांस लीजिए फिर बोलना शुरू कीजिए तो इससे आपको सपोर्ट मिलेगा और आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिल सकते हैं और उनसे एक प्रॉपर वे में थेरेपी लेंगे तो और भी ज़्यादा फायदा होगा तो ये मैं कुछ टिप्स देना चाह रहा था जो लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल में जो सब्सक्राइबर की संख्या मोर देन 13,000 हो गई है और काफ़ी लोग प्यार दे रहे हैं और देखते रहते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लोगों को देते चलूँ कि जहाँ पे लोग प्रोफेशनल अवेलेबल नहीं हैं तो कुछ जो है बेसिक जानकारी से खुद को फ़ायदा पहुँचा सकें तो हर वीडियोस में मैं कुछ न कुछ नई नई जानकारी दूंगा तो थैंक यू हमारे से जुड़ने के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस और आज मैं घर से ही काम कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम थोड़ा सा कफ एंड कोल्ड का सिम्टम्स था तो मैंने सोचा क्लिनिक में आज नहीं जाऊँगा तो घर से ही काम कर रहा हूँ
और मंडे से मैं क्लिनिक जाना शुरू करूँगा। लेकिन हमारा जो मोबाइल नंबर है वो काम करेगा। और इवन धनलक्ष्मी को भी कफ एंड कोल्ड थोड़ा सा हो गया, तो मैंने बोला वो भी घर पे रहेगी, जो हमारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, लेकिन कॉल हम लोग अटेंड कर रहे हैं। और अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे आता हूँ, 5 मिनट्स अभी और टाइम बचा हुआ है। टोनी लिखते हैं, हेलो सर, माय नेम इज़ मनीष एंड माय एज इज 18 फ्रॉम यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। सर मैं बुक तो फ्लो में रीड कर लेता हूँ। आई थिंक वो कहना चाह रहे हैं कि वो फ्लुएंट नहीं है स्पीच में, रीडिंग में ठीक है। तो एक स्पीकिंग जो टास्क है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। बुक में क्या है, अगर वर्ड्स सामने हैं तो आपको सोचना नहीं है कि नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपको प्लानिंग करना पड़ता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या आंसर देना है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो मैं स्टैमरिंग के केस में भी ऐसा देखा है कि पेशेंट रीडिंग में कंपेरेटिवली बेटर होते हैं, लेकिन स्पीकिंग में उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपको स्टैमरिंग की समस्या हो सकती है, लेकिन मैंने आपसे बात नहीं की है तो कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आपको है। तो आपकी आवाज़ को सुनेंगे, समझेंगे, फिर हम गाइड कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। थैंक यू टोनी फॉर आस्किंग क्वेश्चन। और तो Tony, please contact us. Our contact details are in the description of this live. तो टोनी जी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और इस लाइव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारा वेबसाइट मिलेगा। वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, रीच मी, फिर हमारा ईमेल आईडी, गूगल मैप पे एड्रेस कहाँ पे है, कांटेक्ट नंबर, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये लिखते हैं अपना कॉमेडी, ये लिखते हैं प्लीज़ अपलोड वॉइस थेरेपी। अगर मैं वॉइस थेरेपी की टेक्निक अपलोड कर दूंगा तो लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करेंगे, और सेल्फ ट्रीटमेंट से कई बार अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वॉइस थेरेपी जो भी लीजिए आप एक प्रोफेशनल के गाइडेंस में लीजिए, और बेसिक चीज़ जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता है इवन विदाउट सुपरविजन, तो वो चीज़ें मैं प्लान किया हूँ कि अपने हर वीडियो में, हर लाइव में कुछ कुछ बताते चलूँगा। तो आज जैसे कि मैंने स्टैमरिंग के केस में कुछ टिप्स दिया क्या करना चाहिए, वैसे आगे भी देता रहूँगा। लेकिन सारा टेक्निक, जैसे हम लोग हमारे फील्ड में 4 ईयर बैचलर की पढ़ाई होती है, 2 ईयर मास्टर की, तो 6 ईयर की पढ़ाई को एक 6 या 60 मिनट की वीडियो में नहीं डाला जा सकता है। लेकिन बेसिक अवेयरनेस के लिए कितनी ज़रूरत है उतना मैं डालते चलूँगा। और सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि अगर मैं वीडियो सारा डालूंगा स्पीच थेरेपी टेक्निक का, तो लोग सेल्फ ट्रीटमेंट करेंगे और झोला छाप मशरूम की तरह और भी फैल जाएंगे, जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे लोगों को और भी नुकसान पहुंचाएंगे। और अल्ताफ मैच लिखते हैं, सर इन डिस्क्रिप्शन वेयर। अल्ताफ प्लीज रेफर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स। And make Lakshya sir, I want to make a audiologist. Make Lakshya, you want to become audiologist, of course, most welcome, but you should have a passion in this field because that requires a lot of patience. If you have that kind of ability and interest, of course you can plan. तो थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वाचिंग अस, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, एंड इन द फ्यूचर वंस विल बी कमिंग पोस्ट ट्रीटमेंट लाइव, प्लीज वॉच दैट आल्सो। थैंक यू विवेक, जो अवेयरनेस क्रिएट करने की जो मेरी मुहिम है उसके लिए आप राजी हुए और लाइव में आए। थैंक यू सो मच। हम लोग इस लाइव को अब स्टॉप करेंगे।